अजय रिकॉर्डिंग स्टार्ट करो। Yes, I started the recording. So today I start with the different cases for a conductor sliding in a parallel conductor. So here in previous lectures we have studied the Faraday's law of electromagnetic induction, how the magnetic field is related to magnetic flux density B, and how the induced EMF is related to the change of the flux, Lenz's law, and how the number of turns multiply the induced EMF, and how the generating action takes place and the dynamic equation of this generator. In case of motor, how it works, and the induced EMF and source voltage is there. So this you have studied, and for the sake of information of the new students, I may repeat it anytime when they ask. And this is Biot-Savart's law. According to this law, in motoring action, if any conductor has certain current and certain flux density, it is carrying the current under certain flux density, it will feel a force there. And I have taken the case for a motor at no load. Here there was a source and a resistance of the circuit, and the current flowing has induced the force. This force provides the movement in the conductor, and due to the movement there should be some induced EMF, and this turns into a reduction in the current. So this is the case for the motor at no load. There is no any external force or load applied. However, in the second case, we have studied the same condition when the there is a force, load force opposite to the induced force. Okay, in case the current is only there and there is no any external load, the conductor is freely moving, and the F induced is in the x direction of this 0 to x. Now F load reduces this net force on the conductor, and the induced EMF will also be affected by the F load, because the acceleration, there is a deceleration in the conductor velocity due to the F load applied. Now we are considering the case for the generator. Here you can see here that there is a magnetic flux downwards the plane of the paper, that is perpendicular to the plane of paper downwards. And here there are two conductors parallel, and a conducting bar is there, which is also made up of a conductor and has certain cross section, which is more than these two parallel conductors, and there is a F applied. Okay, so F applied is a force on the conductor, which is uh, applied on the conductor to induce an EMF. Means we are imposing a force on the conductor. Okay, and when you are, स्क्रीन नहीं दिख रही है। बताना था यार तुम लोगों को यार, आई एम सॉरी फॉर दैट।
was a mistake. I will repeat it again. So please tell me from where I should repeat. Yes, sir. Now it is visible. See here. So previous slide, you can see uh, here this slide has shown that there is some relation between the flux density B and the magnetic field E. So induced EMF is actually related with the magnetic field, and the flux is related to the flux density. So here the induced EMF will be equal to the derivative of this flux. Okay, so flux is given by the double integral of BDS, and EMF is equal to the EDL. So actually this is same as here. You can see minus represents the Lenz law, and here BDS is equal to the phi, and double integral of BDS represents the uh, total flux over the surface. Okay, so total flux over the surface is the derivative of the total flux of the surface is equal to the induced EMF. Okay, so here this all you have studied here in negative sign is for Lenz law. That is the exactly if some field is there, the uh, conductor itself will generate its field to opposite, uh, exactly opposite to the applied field. So due to this opposite term, negative sign is there, and here you can see the multiple conductors are there. So induced EMF will be multiplied by n terms, because a single turn will have d phi upon dt for one turn, because there is a change in the flux d phi upon dt, and if there are n turns, this will be multiplied by n. And here this inductor operation like generator is given here. Whenever there is a external flux density, and flux density due to the current in the conductor. Okay, so according to the Lenz law, the flux from the conductor, flux from the coil, current I, will exactly oppose to the flux from the external source according to the Lenz law. Okay, so whenever there is a external field, the under this external field, the variable external field is there. So there will be induced voltage, and this resistance will provide a current. Certain resistance will provide a current in the conductor, so there will be a flux in the coil which will try to oppose this flux. Okay, so the direction of current will be decided by the this flux. So you can see external field B external is in upwards direction, and to oppose this B external, the coil will try to set up a magnetic flux density B from I in downwards direction. So for the downwards direction, the n pole should be downwards in the coil. To make this n pole downwards, there should be the current in the this shown direction. You can see the green arrow. So to make the uh, for opposing the external magnetic flux density B external, the coil will set up magnetic flux intensity in downwards direction, and for that the necessary direction of current will be followed. Okay,
So here you can see that the total net external net magnetic flux density B is equal to the B external minus B from I, and this will be equal to the difference of the external flux minus the flux by the coil. Okay, so now you can see the induced voltage will also be equal to the difference of n d phi external upon dt and d phi from I upon dt. You can see here there is a net flux, and this is we can replace this net flux to the flux external minus flux from I. Okay, so here flux from I is actually the total flux linkage. Okay, n phi from I represents the lambda from I. This represents the total flux linkage of the coil. Okay, suppose whatever the flux due to external or internal, that is this flux links to the same winding. Okay, some flux will go outwards and it will go to the infinite, some flux lines, and most of the flux lines will emerge from this coil and again enter into the coil. So total flux link it n phi from I will be equal to lambda from I. This is total flux linkage. So here total flux linkage is also equal to Li. So in place of n phi from I, we can replace the Li. So this term becomes equal to L di upon dt. Okay. Now, if you replace this V induced by Ri, then this whole dynamic equation can be determined, and here you have the motor operation, motor like operation. There is a flux density and source voltage is there, and after a drop of resistance some current is there. Suppose this is a circuit resistance R, and overall the voltage applied between the coil is V induced. Okay, so here you can see that the flux set up by the coil will be equal to B. Okay, so here you see I equal to Vs minus V induced upon R, Vs minus V induced upon R, it is separated, and here you can see that V induced equal to N d phi upon dt. Okay, students, please respond whenever there is necessary. So Yes, sir. V Yes, sir. induced equal to, okay, V induced equal to N d phi upon dt equal to d lambda upon dt. This is derivative of flux linkage. Flux linkage is given by n phi, and the n phi is equal to Li. So V induced equal to L di upon dt. Now, according to this equation, we can get the dynamic equation for the current di upon dt equal to minus R upon Li plus Vs upon T. Okay, and this is how we determine that V induced equal to BLV. This is actually the overall flux is given by the flux magnetic flux density into the area. Area is given by the L into movement, total movement swept, flux swept. The conductor sweeps the flux. Okay, conductor cuts the flux in this whole length travel distance. So the total area of the flux is gained by Lx. So now here you can see that whenever there is a movement under the flux, there will be an induced EMF.
Okay, so this induced EMF depends on the magnitude of magnetic flux density B, as well as the velocity of the conductor. Okay, so here you can see here that d5 upon dt, if you take VL into dx upon dt, and this is equal to BLV. So now this is for the case of generator. Okay, suppose if you are having some current in the conductor, and there is a magnetic flux density, and downwards you can see here that the crosses are showing that the fluxes are downwards, and the conductor current is downwards in the plane of the paper, and magnetic flux are downwards perpendicular to the plane of paper. So here you can see that the conductor will feel a force that is given by BLI. Here one case I have shown you for the motor. Here supply voltage VB is given, and at time t equal to 0 the circuit is turned on. Just a minute. And here you can see that a current is set up in this conductor. Whenever there will be the current setup, VB, because initially there is no any movement, no any induced voltage will be there, so overall current will be given by VB by R. So this is the F induced, the induced force by the conductor, felt by the conductor, will be equal to the BL into I at t equal to 0. Okay, so this will be F induced equal to BL into VB upon R. Okay, because I t equal to 0 is VB by R. After this induced, because there is no any other external forces, so net force applied in the conductor is F induced. So this will accelerate. F net इक्वल टू एम डी वी अपन डी टी होता है हमेशा, ठीक है, एफ नेट। तो जो भी नेट फोर्स कंडक्टर पे लग रहा है उसके कारण क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा। So here you see that whenever there is a force, the conductor will start to move, will start to accelerate. Suppose conductor has started to accelerate, then there will be a induced voltage due to the movement, okay, due to its varying velocity. Okay, so as velocity increases, the induced voltage will start increasing. So here you can see that there will be a current which is difference of the voltages divided by R, because this is a simple network circuit equation. So as V induced increases, the current reduces. Depending on this reduced current, there will be a induced force which will also reduce, because current is reducing, the induced force will also reduce. Then a certain condition will come when there is current is 0 and VB equal to V induced, because at steady state dV upon dt will be 0 and velocity will be constant for steady state case. Though then the F induced will also be 0, so current will also be 0. In that case, the current is 0 and VB equal to V induced. So this is the case for steady state condition in no load condition. Okay, so whenever V induced equal to BL, V equal to VB, we can determine the velocity V
we using this equation V induced by BL, and V induced actually has been determined by this equation at the case of uh, stability steady state condition. So velocity V equal to VB by BL. Clear? Yes, sir. Students, clear? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Next Yes, is sir. case. Next is case for the motor with load. Here you can see that whatever the current setup is by the battery source, there will be induced force in the conductor due to the externally applied voltage or current. Okay. However, there is also a load in this bar. So the net force on the bar will be equal to the difference of these two forces. So taking the F induced as positive and F load as negative, we can see that the net force F induced minus F load. Bar will accelerate if F induced is greater than F load or F net greater than 0. In case there is a F net equal to greater than 0, just net. Okay, someone has some query? No, sir. So here you can see that F net is greater than 0. So in that condition, mdv upon dt is equal to 0. Means for a steady state condition, velocity to be constant, the acceleration should be 0, and due to that the net force should be 0. Okay. And whenever the net force will be positive, the acceleration will be positive. Then whenever there will be the net force less than 0, the acceleration will be negative, that is retardation. Okay. So here you can see that during the acceleration, induced voltage will be equal to VLV, whatever the time varying value of velocity V here, it will increase from 0 to some value. Now you can see that current I okay students, you can see here. So whenever there will be a velocity, increase of velocity, the induced EMF will also increase, and the current will also decrease. Okay, by this relation. So F induced will also reduce. तो पहले क्या था कि in first condition there was no any induced EMF, current was high and induced EMF was high more than the F load, and after the acceleration the induced EMF increases and the current reduces. F induced is also reducing after that. So a condition comes when after increasing of F induced reduces also. Okay, so a condition will come between this oscillation, that when F load is equal to F induced, means F net will be 0. तो उस कंडीशन में क्या होगा कि F induced equal to F load equal to BLI. So steady state current in that condition will be given by F induced by BL. Now
you see here V induced equal to VB minus IR, that is equal to BLV. So we can also get the steady state velocity given by V induced upon BL. So what you see here, that whatever load is applied, the in steady state condition, the induced EMF should be equal to that load. Steady state in the steady state condition, steady state velocity condition, the induced voltage should be such that it should be equal to F load. तो इतना करंट होनी चाहिए, the conductor should carry such a magnitude of current that it can induce force equal to F load under when it is moving under a magnetic field. ओके, जब भी मैग्नेटिक फील्ड में है करंट देंगे तो ये मूव करेगा, तो उसका जो फोर्स है मूवमेंट का, वो फोर्स इतना सफिशिएंट होना चाहिए कि वो लोड को बियर कर सके। स्टेडी स्टेट कंडीशन की क्या है, इट शुड बी इक्वल टू एफ लोड, तो इतना इंड्यूस्ड फोर्स होना चाहिए। तो इतना इंड्यूस्ड फोर्स होने के लिए उसमें सर्टेन वैल्यू ऑफ करंट होनी चाहिए। सो दिस सर्टेन वैल्यू ऑफ करंट इज गिवन बाय एफ इंड्यूस्ड बाय बीएल, दैट इज इक्वल टू एफ लोड अपॉन बीएल। ओके, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Any confusion? Any student has any confusion? No, sir. No, sir. हाँ बताओ, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? इसे No, सिंपल sir. स्टोरी, इसे सिंपल स्टोरी, ठीक है। एक बार एक्सेलरेशन होगा शुरू में, जब इंड्यूस वोल्टेज नहीं है शुरू में, एक्सेलरेशन होने के बाद मूव करेगा तो इंड्यूस वोल्टेज बढ़ता जाएगा, करंट घटती जाएगी, इंड्यूस वोल्टेज भी, इंड्यूस फोर्स भी घटता जाएगा। इंड्यूस फोर्स घटने से डिसेलेरेशन होगा, फिर डिसेलेरेशन होगा तो इंड्यूस वोल्टेज कम होगा, इंड्यूस वोल्टेज कम होने से थोड़ी करंट फिर से बढ़ेगी, करंट बढ़ने से फिर इंड्यूस फोर्स बढ़ेगा। एक देयर विल बी ए ऑसिलेशन in the system, and then there will be some steady state velocity. I had told you previously in the tutorial class that there is a graph. I had shown you the graph here. You can see. You see here this velocity graph. Okay, there will be Yes, some sir. acceleration, and acceleration, deceleration, and then steady state velocity will be there. So now the case for the generator, this is case 3. Okay, so in case 3 you have externally applied force F applied. Okay, so in that case you are trying to move the conductor manually by applying external force so that it induces some voltage. Okay, तो आप इंड्यूस्ड मतलब पहले से करंट नहीं दे रहे हैं इसमें, मतलब कोई वोल्टेज सोर्स, एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स नहीं है वहां पे। यू हैव ओनली ए कंडक्टर इन द फील्ड, तो अंडर द फील्ड इफ यू मूव एनी कंडक्टर देयर विल बी ए इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। तो जब भी आप एफ अप्लाई उस पे अप्लाई करते हैं कंडक्टर पे, so that will start to move, and due to the movement there will be induced EMF. Now suppose that due to this applied force there will be also the acceleration, and depending on the acceleration there will be a movement, the velocity, and due to the velocity there will be a induced voltage. Now this induced voltage is started by a resistance, and so current I is given by V induced by R. In that case, there will be, due to this current in the conductor, there will also be a induced force. तो induced force जो है हमेशा किसके मतलब अपोजिट होगा, जो F अप्लाइड है उसके अपोजिट होगा, क्योंकि हमेशा अपोजिट फ्लक्स जनरेट करने की कोशिश करता है कंडक्टर, जो भी उस पे फ्लक्स जा रहा है, तो that will oppose the conductor. तो F induced will is equal to BLI.
दिस इज एग्जैक्टली अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स। ठीक है ना, मतलब कि वो इनर्शिया है उस पर वो अपोज करेगा, कंडक्टर मूव करने के लिए अपोज करेगा। ठीक है, हम किसी भी व्यक्ति को या किसी भी चीज को हम मूव करने की कोशिश करते हैं तो हमेशा उसमें एक अपोजिट फोर्स अपने आप ही लगता है कि कोई भी आदमी है तो अपोज करेगा आपको मूव करने में, या कोई फ्रिक्शन है तो वो मूव अपोज करेगा। तो जब भी हम एक्सटर्नली अप्लाइड करते हैं तो अंदर से जो सिस्टम है उसका इनर्शिया, इट विल ट्राई टू रिड्यूस योर इफेक्ट। ठीक है, तो जो इंड्यूस्ड वोल्टेज है या इंड्यूस्ड फोर्स है, दिस विल बी अपोजिट टू द योर applied force. So net force on the conductor is equal to F apply minus F induced. Okay, क्योंकि because we are moving from 0 to x direction, we are trying to apply the force, manually apply the force on the conductor in 0 to x direction, and we are moving in x direction. So the F apply is taken positive and exactly opposite F induced is taken negative. So in case of steady state, F apply is equal to F induced. Okay, तो अब हमें ये पता है कि हम कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। वी आर नोइंग F अप्लाई इज नोन टू अस एंड वी डोंट नो F इंड्यूस। तो बट इन स्टेडी स्टेट कंडीशन F अप्लाई इज इक्वल टू F इंड्यूस। सो ये जो रिलेशन है F इंड्यूस इक्वल टू BLI होता है, इसलिए दैट विल बी इक्वल टू F अप्लाई। तो F अप्लाई इक्वल टू BLI, so you can get the steady state current in that case using F apply upon BL. So steady state current which is sufficient to oppose the F apply, मतलब इंड्यूस्ड फोर्स और F अप्लाई जब बराबर हो जाए कितनी करंट होनी चाहिए कि F इंड्यूस इक्वल टू F अप्लाई, कंडक्टर में कितनी करंट होना चाहिए। ठीक है, तो इतनी करंट होने के लिए इंड्यूस्ड वोल्टेज कितना होना चाहिए। तो अगर ये हमने करंट निकाल लिया तो V इंड्यूस्ड इक्वल टू IR इक्वल टू BL, तो V वेलोसिटी इज गिवन बाय V इंड्यूस्ड अपॉन BL। ओके, क्लियर है। अब यहाँ से I पता है हमें, R पता है। ओके, तो हम V इंड्यूस्ड तो निकाल सकते हैं बिकॉज दिस is the generating case and there is no any voltage source, so this is simply induced force, induced voltage is equal to IR। ठीक है, तो IR से हम induced voltage तो निकाल लेंगे because steady state current is given by F apply upon BL। so simply we can determine the velocity V equal to V induced by BL, or equal to I R upon BL, that is F apply upon BL into R by BL, that is F apply into R by BL the whole square। ठीक है, ये समझ में आ गया। यस सर। Yes, Sir. sir. अभी फ्यूजन हो तो बता दो। नो सर। Come to the next case, when there is we are also applying a force, there is also a force, a load on the conductor। ओके, मान लो यहाँ पे एक ईंट बांध दो उसके ऊपर, ठीक है ना, फॉर एक एग्जाम्पल, मतलब इस कंडक्टर पे आप ईंट बांध दीजिए पहले और फिर आप उसको मूव करने की कोशिश करिए इन दिस डायरेक्शन, देन दैट विल बी ए फोर्स इन दिस डायरेक्शन, जो आपने ईंट लगा दिया उसमें, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल मूव करने के लिए आपने रोक रखा है उसको, कुछ भी चीज लगा दिया आपने, ठीक है ना, वो रोक भी रहा है और आप जनरेटिंग मोड में ले जाने के लिए एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं। तो आपका अगर ये इंड्यूस्ड वोल्ट, अंदर से कोई इंड्यूस्ड फोर्स नहीं है, उस कंडीशन पे क्या होगा, F अप्लाई अगर ग्रेटर है F लोड से तो जनरेटिंग मोड में जाएगा, क्योंकि जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो मूव ही नहीं करेगा शुरू में। ठीक है, तो यहाँ पे एक कंडीशन है कि जो एक्सटर्नल
एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू एफ अप्लाई माइनस एफ लोड। ओके, तो टोटल जो एक्सटर्नल फोर्स है, एक तो इंटरनल फोर्स हो गया इंड्यूस्ड फोर्स, और एक्सटर्नल फोर्स क्या हो गए टोटल एफ अप्लाई माइनस एफ लोड। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल है, मतलब हम ये सिस्टम के अंदर से जनरेट नहीं हो रहा है, इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई ये हम बाहर से अप्लाई करते हैं कि 30 न्यूटन लगाया हमने, 20 न्यूटन लगाया, और एफ लोड भी हमने लगा दिया पहले से कि पहले से लोड है कुछ भी 5 न्यूटन 10 न्यूटन जो भी है। तो ये एक्सटर्नल फोर्स हो गया, और एक इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड फोर्स है इंटरनल, जो कि करंट के कारण जनरेट होगा मोटरिंग एक्शन से। ठीक है, T इक्वल टू 0 पे स्विच ऑन होती है, करंट इज सेट अप देयर। ओके, इन दैट केस देयर विल बी नेट फोर्स प्लस इंड्यूस्ड फोर्स। तो यहाँ पे जो नेट अप्लाइड फोर्स है, जैसे ही करंट हम हैं तो एक इंड्यूस्ड फोर्स भी अप्लाई होगा, तो जो कि मूव करने की कोशिश करेगा 0 टू x डायरेक्शन। अगर हम यहाँ पे कोई अप्लाइड फोर्स ना लगाएं, कोई भी लोड ना लगाएं, तो नेचुरल फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा 0 टू x। ठीक है, हमारा आई टी इक्वल टू 0 रेड कलर से दिखाया हुआ है, द रेड कलर्ड करंट, you can see red arrow is showing the current going inwards in the circuit. So by this current there will be induced force which is shown by F induced red colored T equal to 0. तो F induced होगा तो वो किस डायरेक्शन में होगा, अप्लाई के डायरेक्शन में, F अप्लाई। ठीक है, F अप्लाई प्लस F इंड्यूस माइनस F लोड। ठीक है, इनिशियली तो F नेट अगर 0 है या 0 से बड़ा है, 0 से ज्यादा है, तो क्या होगा, कंडक्टर विल एक्सेलरेट। ओके, आप कंडक्टर एक्सेलरेट हुआ तो वेलोसिटी विल इंक्रीज एंड induced voltage will also increase, the current will also decrease certainly. Okay, in that case F induced is also reducing. अब F induced जो है reduce हो रहा है। ठीक है, एक सर्टेन कंडीशन पे ऐसा होगा कि F इंड्यूस जब करंट 0 हो जाएगी। ठीक है, in which condition suppose that the current is 0, तो करंट 0 कंडीशन में F इंड्यूस इक्वल टू 0 होगा। अभी ये स्टेडी स्टेट कंडीशन नहीं बता रहा, दिस इज नॉट फॉर द स्टेडी स्टेट। ये स्टेडी स्टेट कंडीशन में होगा कि dv upon dt जो है will be equal to 0, velocity constant। अभी यहाँ पे we are discussing only in case of current is I equal to 0 and F induced equal to 0। ठीक है, तो इन दैट केस क्या होगा, V induced equal to VB। यहाँ पे हम F net depends on F apply plus F induced minus F load। ओके, तो अभी ये वेलोसिटी के लिए स्टेडी स्टेट कंडीशन ये नहीं कहलाएगी, क्योंकि यहाँ पे F net अप्लाई वगैरह पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो F induced इक्वल टू 0 की कंडीशन में क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स विल ओनली बी प्रेजेंट देयर। ओके, वहां पे एक्सटर्नल फोर्स ही बस होंगे, और उसकी कंडीशन ये है कि अगर F अप्लाई लोड से ज्यादा है तो एक्सेलरेट होगा, और F लोड जो है अप्लाई से ज्यादा है तो डिसेलरेट होगा। ठीक है, सिंपली ये क्लियर है यहाँ पे। तो इसमें स्टेडी स्टेट की कंडीशन क्या है, इफ देयर इज ए स्टेडी स्टेट कंडीशन, अभी इसमें दिखाया नहीं है यहाँ पे, तो यू कैन सी यहाँ पे देखो स्टेडी स्टेट कंडीशन नहीं दिखा, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, टू गेट द स्टेडी स्टेट कंडीशन यू सिंपली पुट F net equal to 0। in that case if F net equal to 0, F apply plus F induced equal to F load। ठीक है, so F induced equal to क्या होगा, इसको आप इक्वलाइज करिए, F apply plus F induced equal to A, so F induced equal to F load minus F apply। ठीक है,
इसके इक्वल हो जाएगा एफ इंड्यूस। तो जब भी हमें दोनों लोड पता है, एफ लोड और एफ अप्लाई, तो हम एफ इंड्यूस निकाल सकते हैं, उससे हम करंट निकाल सकते हैं। और जब भी करंट निकलेगी तो हम इस इक्वेशन से हम क्या निकाल सकते हैं, इंड्यूस्ड वोल्टेज निकाल सकते हैं। और जब भी इंड्यूस्ड वोल्टेज हम निकाल लेंगे तो BLV से हम उसकी वेलोसिटी, स्टेडी स्टेट वेलोसिटी निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो हम इस चीज को, इस प्रोसेस को, जो इसका स्टेडी स्टेट कंडीशन है, इसको हम आपको समझाते हैं कि कैसे होता है। तो सबसे पहले क्या था, एफ नेट इक्वल टू एफ अप्लाई प्लस एफ इंड्यूस माइनस एफ लोड। ठीक है, तो ये एफ लोड। ओके, तो स्टेडी स्टेट कंडीशन में क्या होगा, स्टेडी स्टेट कंडीशन में हो जाएगा, यू कैन सी हियर एफ अप्लाइड इक्वल टू एफ अप्लाइड प्लस एफ इंड्यूस्ड इक्वल टू एफ एल और एफ इंड्यूस्ड इक्वल टू एफ एल माइनस एफ अप्लाई। ओके, एफ अप्लाई हो जाएगा। तो आप नोट करते रहिए चीज, ऑल ऑफ यू प्लीज नोट इट। ठीक है, तो एफ एल माइनस एफ अप्लाई, अब इन दैट केस ये इक्वल टू कितना होता है, BLI। तो BLI के बराबर हो गया ये। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि I इक्वल टू स्टेडी स्टेट करंट, I इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, FL माइनस F अप्लाइड बाई BL। ओके, और अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि IR VB माइनस IR। ओके, तो V इंड्यूस इक्वल टू, यहाँ पे ये जूम करके चल रहे हैं कि जनरेटिंग मोड कम है और मोटरिंग एक्शन ज़्यादा है, तो यहाँ पे भी इंड्यूस इक्वल टू VB माइनस IR। So you have here I given by this equation, and you can get the induced voltage by this equation. Okay, so to determine the velocity V, you can determine this VB minus IR divided by BL. Okay, so VB minus IR divided by BL, and I is given by this FL minus FAP upon BL. Okay, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। Clear? Is it clear to you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now suppose that V induced is greater than VB. This is the generating mode. Okay. मोटरिंग मोड में क्या था कि F
जो यहाँ पे इंड्यूस फोर्स है, ये बैटरी का वोल्टेज ज़्यादा था और इंड्यूस वोल्टेज कम था। तो करंट डायरेक्शन क्या होगी? करंट डायरेक्शन इज इन दिस डायरेक्शन। ओके, अगर वही करंट डायरेक्शन अपोजिट हो जाए, अपोजिट होने का मतलब क्या है कि जनरेटिंग मोड में चला जाए। ओके, तो करंट अपोजिट होने का मतलब बैटरी में एनर्जी फीड करेगा, एंड इफ द करंट इज अपोजिट, द फोर्स, इंड्यूस्ड फोर्स विल आल्सो बी अपोजिट। ओके, सो इन दैट केस ये जो एफ अप्लाई जो नेट है, नेट फोर्स है, वो क्या होगा जनरेटिंग मोड के लिए? इन केस वी इंड्यूस इक्वल टू ग्रेटर देन वी बी, तो एफ अप्लाई माइनस एफ इंड्यूस माइनस एफ एल। ओके, तो यहाँ पे आप ये देखिए कि डायरेक्शन इंड्यूस्ड फोर्स डायरेक्शन इज चेंज बिकॉज इट बिकम्स द जनरेटर। ठीक है, तो व्हेन एफ इंड्यूस इक्वल टू एफ एक्सटर्नल, ठीक है, तो एक्सटर्नल फोर्स के बराबर जब हो जाएगा इंड्यूस्ड फोर्स, एफ अप्लाई माइनस एफ लोड इज एक्सटर्नल फोर्स एंड एफ इंड्यूस इज इंटरनल फोर्स। तो इंटरनल फोर्स जब एक्सटर्नल फोर्स के बराबर हो जाएगा, देयर विल बी स्टेडी स्टेट वेलोसिटी। ठीक है, क्लियर है आपको? You Yes, sir. can see here Yes, net sir. force, Yes, sir. external force is F apply minus F load. Both the direction arrow, blue color arrow is given for F apply, or brown color arrow is given by F load. Okay, here you can see that for generating mode, this is green color, T equal to infinite. Okay, F induced equal to ये green color का arrow है। तो for balance condition, for steady state condition, the net force on the conductor should be zero, to for m dv upon dt should be zero constant velocity के लिए। तो नेट फोर्स कितना है आपका? F अप्लाई माइनस F लोड। ओके, F अप्लाई माइनस F लोड जो नेट फोर्स है, दैट शुड बी इक्वल टू F इंड्यूस्ड। ठीक है, तो अंदर से जितना फोर्स जनरेट होता है, वो बाहर जितना हम फोर्स लगाते हैं, टोटल एफ अप्लाई बाहर से लगाएं और लोड लगाएं, तो जितना भी नेट फोर्स हम बाहर से लगाते हैं और अंदर से इतना फोर्स बनता है एफ इंड्यूस ड्यू टू द जनरेटिंग मोड करंट, मतलब ग्रीन कलर का जो करंट का डायरेक्शन है। ओके, यू कैन सी हियर द ग्रीन एरो गोइंग आउटवर्ड्स टू द रेजिस्टेंस, एंड हियर द रेड कलर इज इन द केस ऑफ मोटरिंग मोड, इंजेक्टिंग इनटू द कंडक्टर। ओके, तो यहाँ पे जो ग्रीन कलर का है, उस करंट के कारण जो इंड्यूस्ड फोर्स है वो इनवर्स होगा। यहाँ यू कैन सी दैट ग्रीन कलर एरो इज शोन। तो इंड्यूस्ड फोर्स इज इक्वल टू एफ अप्लाई माइनस एफ लोड इक्वल टू बी एल आई। सो इन दैट केस, इन जनरेटिंग मोड केस, this is the mixed case. Mixed case means we are also applying the external force, and for generating mode, and we are also applied a load there, and there is also a induced EMF. Induced EMF तो रहेगा ही, जहाँ फील्ड है, मूवमेंट है, तो induced EMF तो होगा ही। ठीक है, depending on the velocity and the current, it can the magnitude can change. तो यहाँ पे you have determine I equal to F induced upon BL, that is F apply minus F load upon BL। तो यहाँ से आप स्टेडी स्टेट करंट निकाल सकते हैं in case of mixed case। ठीक है, so once you have determined the current for the because this is the generating mode, so V induced equal to ग्रेटर देन VB, मतलब कि IR जो ड्रॉप है, जब V इंड्यूस में IR ड्रॉप को ऐड कर देंगे तब जाके VB मिलेगा। मतलब VB छोटा है और V इंड्यूस्ड बड़ा है। यू कैन सी हियर VB छोटा है और V इंड्यूस्ड बड़ा है। ओके, VB प्लस IR। ठीक है, द करंट इज आउटसाइड द सर्किट, तो V इंड्यूस्ड इक्वल टू BL भी होता है, और I हमने यहाँ से निकाल लिया है, I इक्वल टू इनफाइनाइट F L F अप्लाई माइनस F लोड। ठीक है,
तो यहाँ से हम ये यहाँ अगर हम करें तो क्या हो जाएगा, आई इनफाइनाइट इक्वल टू आई इनफाइनाइट इक्वल टू एफ अप्लाई माइनस एफ लोड, ओके, अपॉन बी एल। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका वी इंड्यूस इक्वल टू हो जाएगा, इन नोट करते रहिए, वी इंड्यूस इक्वल टू हो जाएगा एफ सॉरी वी बी प्लस दिस करंट आई इंटू आर। अब ये वी इंड्यूस इक्वल टू कितना होता है, बी एल वी। तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी वी इज इक्वल टू वी इंड्यूस बाई बी एल, मतलब वी माइनस वी प्लस दिस करंट, ओके, दिस करंट you can note it, and into IR divide by BL, okay. So you can see here that the current I equal to F apply minus FL upon BL, and यहाँ पे इंड्यूस्ड वोल्टेज आप निकाल लिया। इंड्यूस्ड वोल्टेज निकालने के बाद आपने यहाँ से वेलोसिटी भी निकाल लिया। इज इट क्लियर टू यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कंफ्यूजन है, बताओ। No, sir. No, sir. ठीक है, तो इन सब में एक प्रॉब्लम भी आ सकती है, ठीक है। लेटर आई विल डिस्कस दिस ट्रांजिएंट केसेस फॉर 1 and 2, और you want to discuss here, get it discussed here in this lecture only, this part, students. This part should be discussed in the same lecture here, or I should discuss later because time is over, I think. Yes, sir. We should discuss it later. Okay, okay. तो मैं अटेंडेंस डाउनलोड कर लेता हूँ, एंड प्लीज टर्न ऑफ द रिकॉर्डिंग।